to talk about MDRT, and I am sure that all of you, when you have been talking about and hearing about MDRT yesterday and today, आपके माइंड में ये आया होगा कि मुझे भी इस्तांबुल में आना ना, मुझे भी जाना है. I want to qualify for MDRT because हैदराबाद में ये माहौल है. From yesterday, the effect of Hyderabad, the Ramoji event has been so great. Believe me, Istanbul is going to be even further great. Think about you walking in the street of that Euro-Asia, which is Istanbul. You walking there as a champion. You go into the stage to take that MDRT $1 million award. I think that is going to be much, much more a moment of pride than what you have got it today. But for that to happen, it is important that you should know how to sell more and more. In the next 3 months, you will have to sell more and more. So आज मैं आपको 4 टेक्निक सिखाने वाला हूं. सुनना चाहोगे क्या? ये लेवल 10 है क्या? सुनना चाहोगे? So I want to start with the first slide called as Bahubali. When this movie called as Bahubali came in 2015, आज आप लोग ने सेट देखा बाहुबली का? Yes or no? आपने देखा? अच्छा लगा क्या बाहुबली का सेट देखे? तो ये 2015 में ये जब मूवी आए थे 2015 में, within 3 months time it collected some 700 crore rupees of money, and after that it went past about 1000 crores of money. ये टाइम में सब बाहुबली का माहौल था. एंड बिलीव मी, 1 साल तक 2015 से लेके 2016 तक मेरा लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट था. आई विल टेल यू व्हाई. I used to go like this for events. I used to go and do motivational session. Used to do lot of training session, etc. उसके बाद लोग आते थे मुझे मिलने के लिए और एक ही चीज बोलते थे कि सर आपको देखे ना कट्टप्पा जैसे दिखते हैं आप. आप सोचो कि आप लोगों को मजा आ रहा है, तालियां बजा रहे हैं. 7 years before I had more hair actually. At that time I had more hair, but nobody used to tell me that my presentation was good, my training was good. Everybody used to come and tell me that बाहुबली का वो कट्टप्पा जैसा आप दिखते हैं. दिखते हैं क्या ऐसे? But I want to talk about the story of Bahubali. आप सोचो कि बाहुबली का क्या स्टोरी है? Bahubali story is about 2 brothers fighting with each other for getting the kingdom. Yes or no? कितना मिनट का स्टोरी है ये? 30 seconds का स्टोरी. 2 भाई लड़ रहे हैं बीच में उनकी किंगडम, वो किंगडम के वो राजा बनने के लिए. That's the story of Bahubali. If I told you this story before you going to watch Bahubali, कि ऐसे नॉर्मल स्टोरी है वो. 2 राजा लोग लड़ रहे हैं, 2 kings are fighting with each other, or 2 brothers are fighting with each other to see who becomes the king, and finally one person win after Bahubali 1 and 2. That's the story of Bahubali. But this year another movie became a big hit which is called as, थोड़ा जोर से बोलिए. मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूं आज मेरा दाढ़ी थोड़ा नॉर्मल नहीं है. I don't know, it is going some, little bit like what Pushpa, Allu Arjun style is. But think about Pushpa story. 700 crores of collection is Pushpa story. 700 crore की collection Pushpa movie ने collect किया है. अगर आप story सोचोगे कि एक person very normal, ordinary पे भी कम आदमी, उनकी courage और boldness की वजह से वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, रेड सैंडलवुड बेच के बड़ा हीरो बन गया, रादर विलन, बट हीरोइज्म दिखा दिया, बहुत पैसा कमा दिया. अगर मैं ये स्टोरी 30 सेकंड में आपको बोलूं, आप मूवी देखने जाएंगे. बट हाउ डिड दीज 2 movies, whether it is Bahubali movie and Pushpa movie, became such a big success? You think about it. They sold that movie very, very well. Story cliche story है, right? उसके बीच में एक लड़की से प्यार हो रहे, वो लड़की देख नहीं रहे, and then finally he gets that girl. Very normal story. Pushpa. Bahubali, very normal story. 2 brothers fighting with each other, one gets the kingdom. Very normal story. But the movie became such a hit because they presented the story very well. Yes or no? They presented the story in such a way that you felt you are a part of that. You felt that I also want to support this guy who is talking about I am not a flower, I am fire, right? मैं flower नहीं हूँ, मैं fire हूँ. आपके अंदर भी आगे कि मैं भी fire हूँ, right? But they presented the story very, very well. The sales technique number 1 is what matters as sales technique number 1 is how you present your story. How you present your story is important. Example, Sijin was talking about this story. Our story of century plan is very simple, right? 15 साल pay करो and you will keep on getting money till the maturity 100 or 80 years. अगर मैंने century plan को ऐसे present किया तो कोई खरीदने वाला नहीं है. Yes or no?
But if you present that story very, very well, like what we have this story of electronic house as a concept, or we have a story of you gifting it to your child कि हर बर्थडे में बच्चे को मिलते रहेंगे, आप इधर रहेगा या नहीं रहेगा, फिर भी वो बच्चे का वो स्माइल उनकी मुस्कान होगा whenever she is getting that money on her birthday. And when we present that story very well, automatically sales will happen. If you go to a customer and say that, sir, you pay for 10 years, 3,92,000 rupees, 20th year you will get 1 crore rupee, nobody will buy your product. It's exactly like two brothers fighting with each other, one gets a kingdom, nobody will buy that. You have to create that vision, that story about how to present that crorepati pitch. Sir, just think about 20 years later on one particular day, in your account, 1 crore gets credited. You get a message, that too guaranteed, that too tax-free. You create that hype around that story, and when you present the story of MGFP very well, people will buy it. So it's the story is not important. या तालियां बजाना तो सब लोगों को बजाना पड़ेगा. The story is not important. How you present the story is important. I explained that to you with two very, very important movies or two blockbuster movies. How they presented the story was important. GEM as a product, I will explain to you how to pitch GEM today. Right, हमारा जो नया यूनिट लिंक प्लान आया है, अगर आप जाओगे जाके बोलोगे सर इसमें सारी चार्जेस मिलेगा आपको वापस, ये बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, स्टोरी खत्म हो गया. Nobody is going to buy it. It's exactly like an normal person, ordinary person becoming an underworld don. Nobody will watch that movie. If you present it very well, automatically sales will happen. So that is the sales technique number 1. What is the technique? Present your story very well. Story is not very important, but how you present your story is very important. सीख लिया आप लोग ने sales technique number 1? आज से follow करोगे? If you do not know about electronic house, learn about it. If you do not know much about crorepati, you learn about it and then go and pitch to the customer. Now let me go to the sales technique number 2. आप में से कितने लोग ये मूवी देखा था? एक बार हाथ उठा लीजिए. अरे वाह, मैंने सोचा था कि ये यंग क्राउड है. But this movie was released in 1975. 1975. 1975. I was not even born in 1975. Right? And almost how many? 47 years later, we are talking about this villain called as Gabbar Singh. Right? अगर आपको याद होगा कि especially in the north part of India or Hindi speaking part of India, वो जमाने में around 30, 40 years before, बच्चे लोग को खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए और सुलाने के लिए क्या बोलते थे? जल्दी खाना खाओ, नहीं तो गब्बर आएगा. आप सोचो कि गब्बर सिंह became such a hero or a villain. विलेन है, बट वो हीरो बन गया. आज भी लोग गब्बर सिंह को याद करते हैं. सेल्स टेक्निक नंबर 2 मैं आपको बताने वाला हूं आज. सेल्स टेक्निक नंबर 2, हाउ डिड गब्बर सिंह became so famous? Gabbar Singh became so famous because the director knew that if you want to become famous, if you want to become the best of the best villain which people will remember, you will have to bring questioning. Questioning technique. याद होगा आपको? उसके पहले एक था, कितने आदमी थे? याद है आपको कितने आदमी थे? You remember this today, even after 47 years, we remember the question which was asked by Gabbar Singh, called as कितने आदमी थे? दूसरा सवाल आपने ऑलरेडी बोल चुका था, होली कब है? He was keeping on asking questions. He was keeping on asking questions. तीसरा सवाल आपको याद होगा, दो गोली मारा, वो दोनों नहीं मरा. तीसरे में पक्का था कि वो मरने वाला था, तो क्या बोला? थोड़ा जोर से बोलिए ना, सही बोल रहे. तेरा क्या होगा कालिया? रे तेरा क्या होगा कालिया? The third question, in 5 minutes of time, he asked 3 questions, not Holi Kabbe. Holi Kabbe is in a different scene altogether. Right? He asked 3 questions, and the third question, एक बंदा वो पहाड़ के ऊपर बैठा था उनका. क्या बोलते उनको? अरे ओ सांबा, मेरे कितना इनाम रखा है मेरे? सरकार हम पे कितना इनाम रखा है? सोचो कि this movie and this villain became a big star because of questioning techniques, questioning after questioning after questioning. So sales technique number 2 is you start asking question to the customer. आप सवाल पूछो कस्टमर को, जाते बराबर मत बोलो कस्टमर को कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट खरीदो. People will not buy it because Gabbar Singh says, even after 47 years, if the customer has to remember you, you have to ask some important question to the customer.
Right, important question to the customer. Clap karna hai to? So that is technique number 2. I will give you some example in the form of gem product. अगर gem product बेचने के लिए जाओगे, आप customer को बोलेंगे कि sir, आप 5 years pay करो, and after that you have partial withdrawal, then your money is going to grow in India Opportunities Fund or any fund that, for that matter, he is not going to buy. गब्बर सिंह से अगर हमको learning लेके अगर बोलना है, for example, you can ask this simple question to the customer, sir, do you want to gift your loved one a Mercedes Benz or a BMW in the next 10 years of time? Question पूछ रहे हम. Customer अभी तक सोच ही नहीं रहे उसके बारे में. Dilip, nobody is clapping after you triggering. If you go and tell the product, believe me, you will not become Gabbar Singh, in the right sense Gabbar Singh. Right? He will not remember you. But when you go to the customer, he is not thinking about a product. वो सोच रहे कि ये आएगा अभी बताएगा और चले जाएगा. And then you are going there and asking a new thought, sir, would you like to gift a BMW or a Mercedes Benz to your loved one in the next 10 years of time? Customer के पास शायद BMW नहीं होगा. Customer के पास शायद Mercedes Benz नहीं होगा. But आप ये नहीं बोल सकते कि would you like to buy a BMW or a Mercedes Benz in 10 years? तब बहुत लंबा टाइम दिखेगा उनको. But you will ask him this question, कितने आदमी थे? वो है, sir, would you like to buy or would you like to gift your loved one a Mercedes Benz or a BMW in the next 10 years of time? Right, that's a question to trigger it. Now, how can you gift? Another question, Holi kab hai? Right, another question to him is, sir, I can explain to you that how can you gift your loved one a BMW or a Mercedes Benz in the next 10 years of time? There are two options for you. Sir, आपके पास दो option है. एक option है कि BMW का आज की cost है, I'm talking about maybe an X1. BMW X1 or the base model will cost about 40 lakh rupees of premium. आपके पास first option ये है कि you can pay 10 lakh rupees as down payment. आप down payment 10 lakh rupees pay कर लिया. After that you took 30 lakh rupees का loan, and if you take 30 lakh rupees का loan for the next 5 years, typically people buy a car loan or they take car loan for 5 years, 60 months की installment. So if you take 30 lakh rupees of installment, 30 lakh rupees of money for your car loan, and if you are going to pay for the next 60 months of time, you will have to pay 63,500 rupees per month. This is one option for you. 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट पे करो और उसके बाद आप 63,500 rupees हर मंथ for the next 60 month पे करो. That is one option for you to gift a BMW or a Mercedes Benz. दूसरा तरीका मैं आपको बताना वाला हूं सर, उसमें आपको सिर्फ 30,000 rupees, no down payment at all. No down payment at all, but 30,000 rupees for the next 5 years. Every month 30,000 rupees. 30,000, 30,000, 30,000. 63,500 नहीं है. Only 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, which means in a year you are paying only 3,60,000 rupees. 5 years you pay that. Keep your money in GEM product, India Opportunities Fund or any fund for your years. And if the stock market grows at 10%, stock market has grown in the last, 30-40 years at a 14% CAGR, 14% CAGR दिया है stock market में पिछले 30-40 साल में. But हम assume कर रहे, even if the market is going to give 10% return to the customer, this 3,60,000 rupees which he paid for 5 years of time would have become 40 lakh rupees of money at the end of 30 years of time, 10 years of time. So 10 साल की बाद अगर आपको BMW और Mercedes Benz अगर आपको आपकी loved one को गिफ्ट करना है तो आज उसके बारे में सोचो and सिर्फ 30,000 rupees keep aside for the next 60 months of time. Right? So this is a different way of presenting your Pushpa. This is a different way of presenting your Bahubali movie. Right? आपको clear हो गया sales technique number 2. Ask questions and then present your product. Now you would have seen these charts. This is a Morningstar report. Morningstar is a very famous organization in United States of America. It's not an Indian organization. It's not a local one which gives some rating to the funds. This Morningstar is the one which has been recognized in India by all life insurance companies and mutual fund companies. Morningstar report of September 1st says our PNB MetLife Premier Multi-Cap Fund is the best in the returns in the last 1 year of time. और हमारे
Our companies, most of the funds are in 5-star or 4-star rating for Morningstar. So when you go to the customer to talk about GEM product and our fund management, you can definitely say that, sir, आप देख लीजिए हमारे fund की performance. This is not what I am saying. This is what Morningstar is saying, which is a very, very well-known organization, very reputed organization. ये recently पिछले एक हफ्ते के अंदर में ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट आए थे. आपने देखा होगा कि इस साल में till September, India's gross tax collection is more than 35% YOY growth. उसका मतलब है इकोनॉमी बढ़ रहा है. उसका मतलब है लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है. If people get more money, they will spend more money, and ultimately the economy will do very well, and the stock market will also do very well. Take the second example, which says vehicle sales surge 8% over last year. Last year से 8% surge है, and most of the companies are doing very, very well in car sales. Right? Even though the semiconductor issue is not still over, cars का वो जो equipment जो semiconductor है वो अभी भी full मिल नहीं रहे उनको, फिर भी it is growing at 8%. Number third, Make in India as a concept is doing very, very well. And Apple, I read it yesterday or something that even Apple 14, which got launched 2 days before, उनका भी बहुत बड़ा production India से start होने वाला है. Apple will get the money, but local manufacturers, right? And the people who are giving all those labor, etc., is all Indians. So Make in India as a concept is going to do very well, and that's why we are saying that India Opportunity Fund will also do very well. Now let me go to the next technique. Sales technique number 3 says, you have to make your customer a hero. Make your customer a hero. That's sales technique number 3. ये हम भूल जाते हैं. When we go to the customer, we have so many things to talk about, right? We have so many things to talk about, and we think that we know financial planning, and we talk in such a way that I am a hero, and you don't know probably about financial planning. But believe me, if you want to make the customer give you that money, अगर customer की pocket से पैसा अगर आपके पास आना है, तो आपको customer को hero बनाना पड़ेगा. How can you make the customer hero? I will tell it to you. And normally आप movie की story देखो, customer को आपको याद दिलाना पड़ेगा. You will have to make the customer feel that whatever he has achieved so far in his life is remarkable. आपने अभी तक जो भी achieve किया, बहुत बढ़िया घर बनाया सर आपने. आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो? उनको फीलिंग दे रहे हो कि सर यू आर ए हीरो. सर आपका बहुत बढ़िया घर है, आपकी बिजनेस बहुत सक्सेसफुल चल रहा है. यू आर ट्राइंग टू मेक हिम ए हीरो, बिकॉज इफ यू मेक हिम ए हीरो इन ए मूवी, इफ यू टेक द मूवी, एक हीरो होता है. आफ्टर दैट हीरो को एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई उनको हेल्प करते हैं, और एंड फाइनली ही विल अब्सॉर्ब दैट सॉल्यूशन एंड ही विल गो अहेड एंड डू व्हाटएवर. विलन को मार दिया या कि वो किंगडम जीत लिया. दिस इज व्हाट ही डज एज अ हीरो. So what is more important for you is to make him feel you are the hero. I am your mentor, or I am going to give you some advices in your life. मैं थोड़ा आपको advice देना चाहता हूं, but finally you will become a bigger hero after you following these instructions or maybe advices which I am going to give. But believe me, you make him a hero. That is sales technique number 3. Sales technique number 1 क्या था? Number 1 की sales technique क्या था? Present your story very, very well. Number 2, गब्बर सिंह को याद करो, ask questions, beautiful questions. Number 3, make your customer a hero. Customer को hero बना दो. And the last one, which is the 4th one, which is if you want to get a sales from the customer, you will have to break his status quo. Status quo का हिंदी क्या होता है? अभी का स्थिति को थोड़ा ब्रेक करो उसको, करेक्ट? यादास्थिति, राइट? ऐसे कुछ है? यदास्थिति हो. The whatever is the status को, the current level of वो जो customer के level को थोड़ा disturb करो, थोड़ा break करो, then he will buy it. Can I have some volunteers coming to the stage, please? कुछ volunteers आ सकता है कि stage पे? कुछ लोग आ सकते हैं कि stage पे? फोटोग्राफर कहाँ है? ओके, वेरी गुड. या कम. जो लोग आ रहे हैं तो आ जाइए प्लीज. थोड़ा ये साइड में भी आ जाओ. One of this side.
वी कैन बी देयर। मैडम यू इधर कहिए। थैंक यू मैम। ये एक एक्सरसाइज था। आपकी कस्टमर भी अपनी स्टेटस को ब्रेक करना नहीं चाहते। आपकी स्टेटस को अभी क्या है? आप वो कंफर्टेबल सीट में बैठा है, राइट? आप कंफर्टेबल सीट में बैठा है और मैंने आपको बोला कि आप में से कुछ वॉलंटियर्स मुझे चाहिए। आप लोगों में से कोई भी उठ नहीं रहा था। Then few people started getting up, and believe me, out of 460 people, only some 8 or 9 people broke the status quo. समझ गए आपको? आपकी कस्टमर भी एग्जैक्टली ऐसे बैठने वाला है। आपकी कस्टमर भी एग्जैक्टली ऐसे बैठने वाला है। आप जितना भी आपके सिर फोड़ो, how much ever you try to break his head, if you don't break his status quo, you will not get a policy. Status quo को मतलब क्या है मैं बताता हूं। I will click a picture with you. स्टेटस को का मतलब है कि मेरे जिंदगी आज बहुत बढ़िया चल रहे। माई लाइफ इज गोइंग वेरी वेरी वेल। आई हैव गॉट अ गुड कार, आई हैव गॉट अ 2 BHK हाउस, राइट? माई चिल्ड्रन आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल, दे आर ऑल स्टडीइंग वेल। दैट इज द स्टेटस को। अगर उसको आप ब्रेक नहीं करेगा तो आपको पॉलिसी नहीं देने वाले। अगर ब्रेक करना है तो उनके दिमाग में कुछ डालना पड़ेगा। डू यू लाइक टू गिफ्ट योर लाउड वन ए BMW और ए Mercedes Benz? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू आर ब्रेकिंग द स्टेटस को ऑफ द कस्टमर। समझ गया आपको? कस्टमर की स्थिति को अगर आपने ब्रेक कर लिया, देन ही विल ट्राई टू लिसन टू यू एंड देन ही विल ट्राई टू बाय इट फ्रॉम यू। कैन आई हैव ए पिक्चर विद ऑल ऑफ देम प्लीज? इन लोगों के लिए जोरदार तालियां सर। क्लोज अप आइए। थैंक यू। इनमें से एक जन को आप चूज करो, वो सबसे स्ट्रांग है, सबसे मोटा है, सबसे स्ट्रांग। एक जन को आप चूज कर लो, कोई भी 1%। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। किसको चूज करूं मैं? 7 में चूज करो। अनूप आप इधर रुक जाओ, बाकी आप सब लोग थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अनूप इधर रुक जाओ। डर गया क्या? सो मैं अनूप को कस्टमर बनाने वाला हूं। अनूप को कस्टमर बनाने वाला हूं। बेटा एक बॉटल पानी दे दो मुझे। थैंक यू जैन। अनूप उधर जाओ, उतना दूर नहीं, इधर मेरे पास। इधर इधर ही रहो, इधर रहो, इधर रहो। मेरे को फेस करके रहना, ऐसे मुझे फेस कर लेना। अभी हम लोग एक सेल्स कॉल कर रहे हैं और ओके, सोचो कि सेल्स कॉल हो रहे हैं। मैं हूं लाइफ पोर्टफोलियो मैनेजर, मैं हूं लाइफ पोर्टफोलियो मैनेजर। ये स्टेटस को में है, राइट? वो चेंज नहीं करना चाहते। 2 BHK काफी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, माई चिल्ड्रन आर स्टडीइंग in good private school, right? My life is going very well. Unless and until I change the status quo of Anup and bring Anup to my place, this is the sales line. अगर इस तरफ मैंने अनूप को लेके आया तो मुझे थोड़ा जोर से बोलो, क्या मिलेगा? I will get my premium. I will get my premium. I will get my century plan. I will get my gem product or an MGFP. Normally हम लोग गलती क्या करते हैं? What do we do normally as a mistake? अनूप मैं आपको खींचने की कोशिश करूंगा, बट आपको आना नहीं है इधर, राइट? नॉर्मली क्या होता है कि मैं इनको खींच रहा हूं, सर मेरे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, सर पंजाब नेशनल। आपको आना नहीं है, जोर दे दो, जोर दे दो। इसलिए मैं ताकत वाले को बुलाया इधर। वो मुझे भी खींच रहे, सही में बोल रहा हूं, वो मुझे भी खींचेगा कि इंश्योरेंस ही मत बेचो। आप इधर आ गया तो मैं भी इंश्योरेंस बेचना छोड़ दूंगा, राइट? बट अगर समझ लो, ये किसके लिए तालियां? इंश्योरेंस छोड़ दो, 20 साल से यही कर रहा हूं। सो समझ लो कि देखो अनूप की उतना स्ट्रेंथ तो मुझे नहीं है, राइट? बट बिलीव मी, आई विल शो यू हाउ टू हैंडल अनूप। Anup is my customer. I am going there and try to pull him, get his sale, get his sale, get his sale by talking about product, features, section 1010D, Punjab National Bank. मैं हूँ MDRT, ये सब बोल दिया, but Anup will not listen to me. He will pull me there because वो पैसा नहीं देना चाहते। इनको स्टेटस को ब्रेक करके, अनूप मैं आपको पुल कर रहा हूँ, अब आ जाना इधर, राइट? डोंट वरी, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। अगर अनूप इधर आ गया तो ऑटोमेटिकली सेल्स होगा। वापस जाओ अनूप। तो अनूप को अगर मुझे इधर लेके आना है तो खींचने से नहीं होगा, खींचने से नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे अनूप के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अनूप इज अ हीरो। अनूप जितना जोर लगाना तो आप लगा लो अभी, राइट? अनूप के साथ धक्का मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अनूप के साथ रह के अनूप को मुझे इधर लेके जाना। वो बहुत आसान है। अब बिल्कुल भी धक्का नहीं मारे, अब रहो, थोड़ा सा जोर लगाओ अनूप। अनूप जितना भी जोर लगाए, राइट? उधर जाना है जितना भी जोर। अब यू थिंक अबाउट इट, इफ आई कम टू हिज प्लेस,
अगर मैं अनूप के पास आ गया, ही इज माई कस्टमर, दिस इज वॉट अनिल रांका वाज टेलिंग, उनकी ड्रॉयर में कस्टमर का ब्लैंक चेक है, क्योंकि वो उधर खड़े होके खींचता नहीं है, वो कस्टमर के पास जाता है और उनको वो फीलिंग देता है कि सर आप हीरो है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। अनूप जितना भी जोर लगाया ना, बहुत आसान से उधर चले जाएगा। अनूप के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू अनूप। तो if you want to break, if you want to get the customer, and if you believe that मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं अच्छा हूं, सेल्स की टेक्निक मुझे मालूम है, believe me, he will not be able to come to you till the time you break the status quo. सर आपका बहुत बढ़िया चल रहा है हर चीज, आपकी घर बहुत बढ़िया बनाया था, आप बहुत ही अच्छा हीरो हो, बट देन ट्रिगर समथिंग। सर एक चीज सोचो, आप 60 इयर्स के बाद आप आपकी फैमिली के साथ कैसे रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहोगे? आपने गब्बर वाला सवाल पूछ लिया, कस्टमर की स्टेटस को ब्रेक हो गया, वो सोचना शुरू करेंगे कि मेरा लाइफ 60 के बाद वाइफ के साथ में कैसे स्पेंड करने वाले हो। सो दीज आर द 4 सेल्स टेक्निक व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। Number one was how do you present your story is important. Number 2 is importance of asking questions. Number 3 is make your customer a hero. And number 4 is make your customer break his status quo. समझ गया आपको ये 4? आसान है या मुश्किल है? इजी है ना ये? मेरे लास्ट स्लाइड, आई वांट टू शो यू दिस स्लाइड। बिलीव मी, दिस इज इस्तांबुल, and this is Istanbul, and if you qualify for MDRT, believe me, every year you will try to qualify for MDRT. मैं आपको एक चीज बता के क्लोज करना चाहूंगा कि हमको हमारी बॉडी से बहुत सारे सीख मिल सकता है। फ्रॉम आवर बॉडी वी कैन गेट लॉट ऑफ इनपुट एंड इंस्पिरेशन। यू थिंक अबाउट योर हार्ट, you think about your heart, it is beating every minute 72 times. Every minute it is beating 72 times. Whether you are sleeping, whether you are walking, whether you are sitting, it is beating 72 times in a minute. आपके पैर, मुझे किधर भी जाना है, मेरे पैर मुझे लेके जा रहे हैं, right? It is taking all the weight of me and it is taking me wherever I want to go. Just think about one thing. अगर आपकी हार्ट को अगर बात करने का वो जो एबिलिटी दिया भगवान ने, इफ योर हार्ट इज बीइंग गिवन द एबिलिटी टू टॉक टू यू, एंड इफ द हार्ट टेल्स यू दैट आई एम नॉन स्टॉप वर्किंग 72 टाइम्स एवरी मिनट, व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू वॉक, व्हेन यू सिट, कैन यू नॉट वर्क हार्ड एंड गेट टू MDRT एंड गो टू इस्तांबुल? व्हाट विल बी योर आंसर टू योर हार्ट? If your legs can talk to you, if your legs can talk to you, and if your legs tell that, I have taken you to Ramoji to motivate you, I have taken you to many customers, if I am carrying all the weight of you wherever you want to go to, can you not take me to Istanbul? What will be the answer to the leg? आप सोचिए कि अगर आपकी लेग को ये पावर है आपको पूछने के लिए, believe me, we will answer that I will take you to Istanbul. Yes or no? Yes or no? So with that, all the best and have a great day today, and we will all see you in Istanbul. Thank you so much and salute to all of you.